Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in yesterday's session, we discussed about which object? Math object. Now, today, one more object we will cover, that is date object. Okay. And when to use this date object? Wherever you have to deal with date, time, timestamp. Okay. So that time you can make use of date object. So this is also an inbuilt object. It's an inbuilt provided by JavaScript only. You can directly start using this date object. But here you can create instance of it by using new. They have provided constructors of the date, parameterized constructors and all. Some methods are there. Okay, some setters, getters. So date object, it's a inbuilt object provided by JavaScript to deal with date, time, timestamp. Now you'll say, what is timestamp? Timestamp is actually a number representing how many milliseconds are elapsed from the start of the calendar till now, whatever current instance is. So that timestamp is telling, like, if the current instance is something like 75,000 something. So that number indicates how many milliseconds are elapsed from start of the calendar till now or till that time. So that is called as a timestamp. So that start of the calendar is actually 1 Jan 1970. Okay, and that is considered as a reference point, and from there all the times are calculated. Now, actually, it's considered as a position on the globe. It is called as a position on the globe, and from there 5.3, 5.3, 5.5, and 5.5 hours, India is away from that position. Correct? So whatever time is over there, if you add that 5.5, the time will be in India. Likewise, everyone will have their reference. Everyone in the globe will have the timing with reference to that reference timing, which they have considered. And the start of that calendar is 1 Jan 1970 midnight. Correct? That is called as Greenwich Meridian time. So how to deal with this date objects in JavaScript? I told you date object in JavaScript is used to work with dates when you want to compare two dates, or you want to find out, or you want to add something in one date and get a new date, or you want to subtract some number from a date and get a previous date. Okay, so two dates you want to compare, or add some number in one date, or subtract some number from one date, or you want to subtract two dates and find out how many days are there between these two dates. So all these type of operations when you want to do on dates, then use this date object. Same way for timing also, and timestamps. Timestamp, I told you, it is one number, and that number indicate what? How much millisecond is elapsed from the start of the calendar till that time, whatever timestamp. जब का टाइम स्टैम्प है, जिस समय का टाइम स्टैम्प है, वो नंबर बताता है कि कितने मिली सेकेंड स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर टिल ईयर. तो इट इज 1 Jan 1970. Actually, it is taken with reference when Unix was made. Unix का implementation तब था, वो उसी को रेफरेंस लेके चलता है. So it allows you to create new dates. You can read the values. वो डेट बनाने के बाद उसका डे पार्ट, मंथ पार्ट, ईयर पार्ट चाहिए, आवर्स पार्ट, मिनट्स पार्ट, तो वो कर सकते हो. Modify, meaning you are adding some number of days and getting a new date, or subtracting some days and getting the old date, formatting that date. All these activities you can do. But always remember, internally, everything is based on that start of the calendar. Internally, JavaScript stores all the dates as a timestamp only.
जावास्क्रिप्ट हर डेट को इंटरनली ऐसे टाइम स्टैम्प फॉर्म में रखेगा. एंड व्हाट इज दैट टाइम स्टैम्प? इट इज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स elapsed. गेट इट? तो अगर अभी मैंने अभी का जस्ट नाउ का टाइम स्टैम्प दिया, तो यू विल गेट वन नंबर एंड दैट नंबर विल इंडिकेट व्हाट, हाउ मेनी मिली सेकेंड्स आर elapsed from the start of the calendar till now. Correct? And that start calendar is treated this way. 1 Jan 1970 midnight, and वहां से calendar start किया. Correct? This UTC is actually called as coordinated universal time. Means वो ग्लोब पे ना वो एक पोजीशन कंसिडर करता है. Correct? जैसे हम कहते हैं ना वो इक्वेटर एंड 0 डिग्री पे, तो वहां जो जगह है वो जगह का रेफरेंस टाइम स्टार्ट टाइम. एंड इफ दिस इज ग्लोब, एंड फिर ग्लोब पे कोई तो पोजीशन एक जगह है. करेक्ट? कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड लैंजिट्यूड, आई होप यू नो इट. करेक्ट? ज्योग्राफी पढ़ा था. तो इट विल टेक दैट एज अ रेफरेंस, एंड वहां से फिर जो भी जगह है, लाइक इंडिया यहाँ में रहेगा, यूके कहीं है, यूएस कहीं है, तो उनके टाइमिंग्स ये टाइम के रेफरेंस कंसिडर किए जाते हैं. करेक्ट? तो 5.5 hour वी आर अवे फ्रॉम दैट टाइम इंडिया. तो उसका जो भी टाइम रहेगा उसमें उतना ऐड किया तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलता है, आईएसटी. इट इज कॉल्ड एज यूनिक्स इपॉक. यूनिक्स इपॉक, और यू कैन कॉल इट एज टाइम स्टैम्प. यूनिक्स इपॉक मीन्स ही टाइम स्टैम्प है. यूनिक्स इंटरनल्स वगैरह पढ़ा है कि नहीं पता नहीं. वी हैड, लाइक मैंने, माय स्पेशल इलेक्टिव सब्जेक्ट वाज ओनली इंटरनल डिजाइन ऑफ यूनिक्स डिजाइन. वो मॉरिस बाग का पूरा बुक पढ़ लिया था, जिसमें how the internal Unix structure is, and everything is implemented in C. पहला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी में बना, इसलिए तब से सी पावरफुल लैंग्वेज बन गई. कहते हैं इट वाज व्हाई सी बिकेम सो मच फेमस, बिकॉज द फर्स्ट thing which was made in C was this Unix operating system, a first multi-user operating system. Okay, so we'll not go into much detail. Now, how to create these dates, then what are different methods to access, setters we have, getters we have, सब एक एक करके देखते हैं. There are different ways by which you can create date. They have given constructors, date के constructors है, so just new, and when you write date, okay, and round bracket, you're not passing anything. It will create a date and time, the current one, current, at that time when this instruction got executed. ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा उस समय का डेट एंड टाइम हमें लाके देगा. करेक्ट? तो इफ यू प्रिंट एंड सी दिस, इट विल प्रिंट डेट एंड टाइम. विच डेट एंड टाइम? दैट डेट एंड टाइम व्हेन दिस ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड. इसको हम नाउ कह सकते हैं, अभी अभी का, जिस समय ये ऑब्जेक्ट बन गया. करेक्ट? फिर बाकी भी है, लाइक स्ट्रिंग दे सकते हो, वो स्ट्रिंग से डेट बन जाएगा, लाइक न्यू date, and you can pass a string in which there is date, like 2026 slash, like that. तो ये string date को लेके फिर date object create करके देगा. ये string है, string से date object बनेगा. Get it? Then you have one constructor in which you can pass all the things separately. You can pass d, m, y, hours, minute, सब कुछ separate, and ये सब कुछ लेके फिर एक date object बना के देगा. Correct? So this way, many ways are there for creating data object. Few इधर list out किए. जैसे ये first one, when you don't pass anything, this is the default constructor. It will create date and time, but representing the current date and time. Current means समझा ना, जिस समय ये instruction execute होगा. The time when the instruction is getting executed. Here you can pass millisecond. जितना millisecond देंगे, उसको वो date and time में convert करेगा. क्यों? क्योंकि इतने मिली सेकेंड वो स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर से कंसिडर करता है. तो इफ आई गिव 1,70,345 मिली सेकेंड, so it will convert that into some date and time. And you can convert a string also to date object. That string should contain a date,
And you can give all the values separately. Year, month, day, hours, minutes, second, millisecond. सब values देना जरूरी नहीं है. When you don't give all values, remaining are taken 0 0. करेक्ट. जैसे मैंने सिर्फ year, month and day दिया. Month start with 0, guys. Means अगर 0 दिया है तो it will take January. 11 it will take last December. ठीक है. तो this way you can create different date objects. See, a month is 0 based. Jan is treated 0. December is 11. Examples देता हूं देखो few. पहला example, new date, current date and time. This will take 0 milliseconds. ठीक है. Then this is from that string. ये string से एक date बन रहा है. This is from different values, year, month, day. Okay, so all examples I'll show you. Or we can do it here, guys, instead of going it console पे देखना है. So you can write a script only here. Date demo 1.html. ठीक है. You can create date objects different way. First default, दूसरा date object बनाता हूँ from some milliseconds. I'm giving millisecond 1, 2, 3, 4, 5, 6 suppose. तो इतने milliseconds को वो appropriate, अभी इतना millisecond start of the calendar से इतना millisecond जो date बनता रहेगा that it will give you. Okay, then let d3 equal to new date. You can pass a string 2026-08-01. Then d4, you can create it from passing all the things separately, 2026, then 07, sorry, only 7, then 15, hours, minutes, second भी दे देता हूँ, 5 hours, 30 minutes, 45 seconds. Okay, and then console.log, you can print and see all the dates. Okay, and obviously you'll be using in such applications where there is date and time needed. Getting like many places are there, like applications which is taking appointments. Wherever appointments, then you need date. Booking systems are there, like airline or movie ticket or train ticket, bus ticket. Everywhere date is sure going to come. Get it? So many applications are there where you have to deal with date. See, so it is printing accordingly. First case, current date and time. Therefore, is it taking Tuesday, August 11, 2026? 17 means 5, 17 is considered as 5 o'clock, no? 5 o'clock, 20 minute, 39 second, whatever. Then this is considered as that many milliseconds. That many milliseconds from the start of the calendar. देखो, उतना मिलीसेकेंड एक दिन भी नहीं कर रहा है. 1 Jan 1970 ही होता है. Correct? Then this is the one which we gave. String दिया, but यहाँ time नहीं दिया, तो it takes it as 5:30 by default. मैंने कहा था ना कि ये क्या कंसिडर करेगा डिफॉल्ट जहां से ये रन करो, दैट इज लोकल. तो इंडिया इज 5.5 hours away from that reference point. It is called as coordinated universal time. Correct? Then in the last one, we have given year, month, day, hours, minutes, second. So whatever you have given, that is printed. Okay? Then some methods are there for date object. For the date objects, there are methods also provided. Some methods are called as getter methods. Getter methods will return you the value. Setter methods are for modifying.
Like already, if you have a date object, correct? Date object, and you want the year part of it, or the month part, or the day part, or the hours part, or minutes part, or the second part of it, you can extract it by using getters. They have given some getter functions. See, get full year will return the year part from that date. These are all methods. Huh? These are methods of date object. Therefore, to invoke them, you will need a date object. D dot get full year. Okay, it will return the year part in that date. जो date object उसको invoke कर रहा है, ये get full year को invoke कौन कर रहा है? Who is invoking get full year? D. तो D is a date object. तो ये date object के अंदर जो year part है, वो हमें लाके देगा. Correct? So it will return you the year part. Then month, D dot get month is there. It will return the month part. Correct? Then the date will return you the month only, but day of month. It will not return month, day of month. Correct? Then day of week. It is which day of the week that it will return. Okay, so date part will return like today in this case. In this case, it will return one. Which one? Get date. And get month will return this 8. 8. Get full year will return this 2026. Get it? Then get day will return. It is the which day of week. Get it? Like today is Tuesday. So accordingly, like if there's Sunday is starting with 0, Sunday अगर 0 से शुरू हो रहा है तो Monday 1 है तो Tuesday 2 है. So that way. Okay. Then the hours part, the minutes part, seconds part, millisecond part, and directly the timestamp if you want. आपको timestamp चाहिए. Timestamp means milliseconds from the start of the calendar. Start of the calendar से कितना millisecond ये date है. This date is how many milliseconds away from that start that it will return. ठीक है? So these are all getter methods. Example we will try to apply on some of these objects. Like मैं ये वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ 1 2 3 4 5 6 जो दिया था उसमें चलो 7 8 भी ऐड कर देता हूँ. ठीक है? If you run this, now still it is considering as January 1. उतना मिलीसेकंड elapse नहीं हुआ. Correct? Now it has gone to May 24, 1970. 3 months आगे चला गया. From 1 Jan 1970, इतना milliseconds कितना आगे elapse हुआ है 3 months आगे चला गया. Like that. ठीक है? Now from that, try to extract different things. Okay, चलो मैं D2 जो D2 है D2 dot get full year part extract करता हूँ. All the things you can extract and check. Okay, whatever values. Like D2 dot get month अगर print करके देखना है. D2 dot get date print करना है. D2 dot get weekday, that is day of week. D2 dot hours print करना है. या D2 dot minutes चाहिए. या D2 dot seconds part चाहिए. D2 dot milliseconds कितना है वो चाहिए रहेगा. राउंड कौन लिखेगा. दिस इज कॉल टू मेथड बेस. ठीक है, मेथड कॉल कर रहे हो तो एज यू आर कॉलिंग मेथड यू हैव टू राइट दैट राउंड. यू आर नॉट जस्ट पासिंग द रेफरेंस ऑफ योर मेथड. एंड देन D2 डॉट गेट टाइम ये आपको लाके देगा नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर. कितना मिली सेकेंड्स है
See, is it returning the same milliseconds which we passed? हमने ये milliseconds ही पास किए थे ना, और ये milliseconds से ही वो डेट जनरेट हुआ। तो जब आप गेट टाइम लिखते हो तो इट गिव्स यू हाउ मच milliseconds that date represent from the start of the calendar. कैलेंडर स्टार्ट से तब तक कितने मिली सेकेंड, करेक्ट? अगर चाहिए तो ये नाउ का नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स प्रिंट करके देखो। नाउ मीन समझा ना, जिसको हमने आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा था, d1.getTime सपोज दिस इज द करंट डेट एंड टाइम गेस। ये d1 तो कुछ पास नहीं किया, तो डज इट रिप्रेजेंट करंट डेट एंड टाइम? And for that, if I write d1.getTime, will it return the number of milliseconds from start of the calendar till today? Right? See, it comes out to be this much. ये कह रहा है ये आज का दिन स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर टिल आज तक इतने नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स क्या हुआ है, elapsed हुआ है। ओके, तो दिस वे यू कैन गेट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, यह सी इट इज गिविंग जीरो। अभी जीरो दे रहा है मीन्स मंडे से जीरो शुरू होता है, संडे से नहीं। राइट और नो, जीरो कहीं तो आया ना, 24 विल चेक फॉर व्हाट जीरो हैज कम। गेट फुल ईयर, देन गेट मंथ। हाँ वो D2 का है ना, राइट, नॉट ऑफ D1। D1 का चेक करके देखो, कंसोल डॉट लॉग D1 डॉट गेट डेट। ठीक है, अगर वन आया मीन्स जीरो मंडे कंसिडर हुआ है। ठीक है, सी टू आया, टू है मीन्स जीरो से ही है, संडे जीरो है, मंडे वन है, आज ट्यूसडे, तो इट इज टेकिंग टू। मीन्स व्हाट आई सेड वाज राइट, संडे इज कंसिडर्ड एज जीरो, वीकडे वो संडे से शुरू करता है, संडे टिल सैटरडे, लाइक दैट। ठीक है, ओके, तो आई होप यू गॉट इट। जैसे देखो, यू आर क्रिएटिंग अ डेट ऑब्जेक्ट, करंट डेट ऑब्जेक्ट, नथिंग इज पास, तो विल इट टेक करंट डेट एंड टाइम? इट विल टेक करंट डेट एंड टाइम, एंड करंट डेट एंड टाइम का ईयर पार्ट, मंथ पार्ट, डे पार्ट, getting clear? Okay, then if you want to change the values, date object बना दिया है, बट फिर उसमें से आर पार्ट मॉडिफाई करना है, या डेट पार्ट और ईयर पार्ट, मंथ पार्ट, देन दे हैव गिवन सेटर मेथड्स आल्सो। जैसे गेटर्स है वैसे सेटर्स है। आई होप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग such concepts you might have learned about getter and setter. Getters are also called as accessors, and setters are also called as mutators. Correct? Setters, what they do, they take value from outside and store them in the data member. अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसमें वैल्यू रखता है, एंड गेटर डेटा मेंबर्स की वैल्यू आउटसाइड वर्ल्ड को देता है। वॉट एवर इज द वैल्यू इन द डेटा मेंबर, इट इज जस्ट गिविंग इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। करेक्ट? डेट ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर्स रहेंगे ना इंटरनली। Whenever you create a date object, will that date object have some data members? एक D के लिए रहेगा, मंथ के लिए रहेगा, ईयर के लिए रहेगा। ये सब वैल्यू स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा मेंबर्स रहेंगे ना डेट ऑब्जेक्ट के अंदर। करेक्ट? तो यू आर जस्ट एक्सेसिंग दैट वैल्यूज, तो गेटर्स है। एंड अगर इनमें वैल्यू स्टोर करने इन डेटा मेंबर्स में, देन सेटर्स। सेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेटर्स बिकॉज दे मॉडिफाई द वैल्यूज। ठीक है, तो सेटर्स क्या क्या है देखो, ईयर पार्ट चेंज करना है तो सेट फुल ईयर, मंथ पार्ट चेंज करना है, डे पार्ट चेंज करना है, आवर्स पार्ट, मिनट्स पार्ट, सेकेंड्स पार्ट, तो हर एक के लिए क्या दिया हुआ है, सेटर मेथड्स आर देयर। अंडरस्टैंडिंग क्लियर? सी, तो यू हैव क्रिएटेड वन डिफॉल्ट डेट, ये आज का डेट एंड टाइम लेगा, उसका ईयर पार्ट चेंज कर देता हूं एंड मंथ जनवरी कर देता हूं, एंड देन यू कैन प्रिंट एंड सी द न्यू डेट। Correct? See, I'm creating another date. Let D5 equal to new date. Will it take current date and time? Yes.
console.log d5. You can print and see. It will print the current date and time. Now, in that, what I'm doing is I'm changing the year part to 2030, suppose. Then I'm changing the month part to 3. 3 means April it will take because month starts from the 3. If I'm giving, it will take April. Okay. Then I'm changing the day part. Sorry, get me set. Okay. Then I'm changing the date part also. Suppose I'm taking 5. And फिर अगर हम console.log में ये डेट प्रिंट करके देखेंगे. ओके, तो पहली बार जब प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट एज 11 अगस्त 2026. बट अभी प्रिंट करके देखोगे तो इट विल बी 5 अप्रैल 2030. गेटिंग गाइस? मींस उसी डेट में हमने ईयर पार्ट, मंथ पार्ट, डे पार्ट चेंज कर दिया. टाइम उसने सेम रखा है क्योंकि टाइम हमने मॉडिफाई नहीं किया. तो ये डेट का जो टाइमिंग था वही ये न्यू डेट का टाइमिंग रह गया, बट बाकी के चेंज हो गए. कैन यू सी? हैज इट मेड 5 अप्रैल 2030? देखो 2030 5 अप्रैल एंड 5 अप्रैल इज फ्राइडे, देयरफॉर फ्राइडे प्रिंट. ठीक है? यस और नो? कैन यू गिव मी क्विक कंफर्मेशन? Yes, यू कैन yes, Vinod. मॉडिफाई डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. अलग अलग चीजें भी मॉडिफाई कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी ओनली ईयर पार्ट एंड द मंथ पार्ट एंड ऑल. ठीक है? Then there are some methods of date provided for formatting. You want to format the date as per your requirement. ठीक है? So for that also methods are there. Like one is toString, means you want date in different format. ऐसे बोलो कि आपके पास date है, but जो default आता है वो ये format में आता है. Default is in this format. Okay, so if you want in different formats, then different functions are there, like toString. It will return everything. The day, the month, year, timing, पूरा आ जाने वाला है. ठीक है? Full string will come. See, here only we will check console.log d5 dot, which is same. ये जो आता है ना, ये टू स्ट्रिंग की वजह से ही आता है. देखो, अगर हमने एक कोई ऑब्जेक्ट लॉग को भेजा, to log whenever you're passing any object, actually here it is going to call one magic method, that is toString. तो ये काम जो है वो एक्चुअली toString से ही हुआ. ये जो only d5 लिखा है, यहां एक toString फंक्शन कॉल हुआ and toString returns this string, and that string you have given to log. Log is displaying on the monitor. तो explicitly अगर toString कॉल कर दो, ठीक है, तो भी वही आउटपुट आएगा. Is it giving the same output? Then to date string. To date string means only the date part it will give, not the timing and all those things. Can you see it is saying GMT plus 5:30? That is called as Greenwich Meridian time. वो Greenwich Meridian वो reference coordinate लिया है, जहां से घड़ी शुरू होता है. तो हम लोग वहां से 5.5 hour फार है, तो उतना ऐड वो वाले टाइम में अगर ये ऐड किया तो आपको इंडिया का टाइम मिल जाता है. करेक्ट? तो वो याद रखो, ऐसी चीज है, basic things. d5 dot to date string. You will get only which part? The date part, not the time part and all that thing. सिर्फ date part लाके दिया. Correct? Then only time part चाहिए, ये time का part चाहिए रहेगा. Then उसके लिए भी मेथड दिया है, console dot log d5 dot to time string. ठीक है? See, only the time part has come. ये डेट पार्ट दे रहा है, ये टाइम पार्ट, एंड टोटल कौन लाके देता है? टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग ये कंसेप्ट जावा में भी है. ठीक है? देन वी हैव टू आईएसओ स्ट्रिंग.
It's called as इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने वो जो आईएसओ फॉर्मेट है, तो आईएसओ फॉर्मेट में ये आता है. इट इज एन आईएसओ फॉर्मेट, राइट? So you can check what is printed in that format. So for that also we have d5.2 ISO string. So it gives this. It's hours, minutes, seconds. Okay. Then the local date and time. Local means what setting is there in your machine. तुम्हारे मशीन में कैसे डेट सेट है, करेक्ट? That way it will come to the local setting. Okay, so d5.2 local date string and to local time string. See, तो local system में means in our system we represent like this, but maybe like if you are in different zone, अगर आप अलग जोन में रहोगे तो maybe this format may come different, करेक्ट? तो अपने सिस्टम में ये डेट इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, पहले डेट, फिर मंथ एंड फिर ईयर विद अ स्लैश. Maybe in your machine, it may be different. It depends on what setting is there in your computer. Correct? Then same way local time भी print करके देख सकते हो. See, local time comes in this way: hours, minutes, second, AM, PM. है ना? अपने इंडिया में हम लोग AM, PM से रिप्रेजेंट. तो AM मीन्स इट इज मॉर्निंग, पहले के 12 आवर्स एंड बाद के 12 आवर्स में PM आता है. 24 आवर फॉर्मेट भी होता है, 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट भी होता है, राइट? हाँ, नॉर्मली जैसे इधर देखो 1739 दिख रहा है, तो 1739 में 17 में 12 माइनस करोगे तो इट इज 539 एक्चुअली, करेक्ट? तो वैसे लोकल फॉर्मेट में चाहिए डेट, लोकल फॉर्मेट में टाइम चाहिए, तो यू कैन यूज दैट. ठीक है? फॉर नॉट ओनली फॉर D5, यू कैन चेक फॉर अदर ऑल्सो. लाइक D1 के लिए देखते हैं, जिसको हमने टाइम स्टैम्प दे के बनाया था. D1 डॉट get to local time. See, it is 5:40 PM. D1 नहीं, D1 भी नहीं, D2 चाहिए. D2 हमने बनाया था by giving timestamp. देखो वो 2:51 AM means in the morning part. ये वाला डेट हमने हमने टाइम स्टैम्प बना दे के बनाया था ना. This was the timestamp given. This timestamp means it is considered as that many milliseconds from the start of the calendar. कैलेंडर से इतना मिली सेकेंड इलैप्स हुआ. ओके, यू कैन चेक एग्जांपल्स तो अभी मैंने करके दिखाया. एंड देयर आर सम स्टैटिक मेथड्स. स्टैटिक मींस डेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, you directly have to access them by date dot. Get it? Whenever you access any method by creating an instance of it. Instance means जब इसकी कॉपी बनाते हो by न्यू से कॉपी बनाया, और फिर जब आप डी डॉट कहते हो तो दे आर इंस्टेंस मेथड, बिकॉज दे आर द मेथड्स गोइंग टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. ये वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डेटा वो मेथड एक्सेस करने वाला है, इसलिए उसको इंस्टेंस मेथड. एंड देन देर आर सम स्टैटिक मेथड which you directly write by date dot. You don't have to create an instance of it. उसमें से few है like now, which will return the current date and time. करेक्ट? तो ये करंट, अभी एट दिस मोमेंट
कितने मिली सेकेंड्स इलैप्स हुए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर, करेक्ट? ऐसे अगर चाहिए तो वो चेक करके देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट नाउ, ये इतना है। थोड़ी देर पहले भी वही था, ऐसे थोड़ा सा बढ़ गया, सम सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एडेड। तो इट इज सेइंग आज का डेट जो है, अभी का, जस्ट नाउ अभी का जो डेट एंड टाइम है, वो इतना मिली सेकेंड फार है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर। स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर से इतने मिली सेकेंड्स दूर है। फिर इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो इनटू आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड ऑल। ये टाइम स्टैम्प अगर मैंने डेट के कंस्ट्रक्टर को भेज दिया तो इट विल गिव यू अ न्यू डेट, करेक्ट? एंड अगर आपको स्ट्रिंग को डेट में, टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करना है, देन पार्स मेथड। तो कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइम स्टैम्प, करेक्ट? एग्जांपल, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करता है, अभी का डेट एंड टाइम दे देता हूं, ओके? डेट डॉट पार्स एंड सपोज टूडेज 2026 08 11 5:30 5:43 PM अगर मैं देता हूं, लेट्स चेक। नियर अबाउट थोड़ा बहुत सेम टाइम स्टैम्प है, थोड़े मिली सेकेंड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ना? क्योंकि मैंने ये 5:43, फिर इसके आगे का सेकेंड्स नहीं लिया, ये सिर्फ आवर्स एंड मिनट्स है। फिर इसके अंदर भी सेकेंड्स रहेगा, फिर थोड़े मिली सेकेंड्स, तो थोड़ा बहुत नियर अबाउट मिली सेकेंड्स मैच होते हैं, करेक्ट? तो इट इज कन्वर्टिंग दिस डेट एंड टाइम टू टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मीन समझ में आया ना? नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स मीन्स इतने मिली सेकेंड स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर से, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर से इतने मिली सेकेंड्स इलैप्स हुए। कब तक? ये डेट तक। माने ये डेट और स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर एंड ये डेट के बीच में इतने मिली सेकेंड्स क्या हुए हैं, इलैप्स हुए, get it? And create a UTC timestamp, meaning you can give, that is called as coordinated universal time. तो इसको आप लोग वो अलग अलग दे सकते हो, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड ऑल, एंड वो कन्वर्ट करके टाइम स्टैम्प ला के देगा, करेक्ट? तो सेम थिंग लाइक हियर, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सेम देता हूं मैं, डेट डॉट यूटीसी एंड आई गिव 2026 ओनली, ओके? देन मंथ 8 है तो इधर 7 देना पड़ेगा, 11, getting? And then hours, minutes, seconds and all. तो सपोज मैं यहाँ hours 17 देता हूँ, 45 minutes and suppose not more, बाकी का वो 00 ले लेगा। इसको भी किस में कन्वर्ट करके देगा, इनटू टाइम स्टैम्प से। दिख रहा है? नियर अबाउट सेम है, थोड़ा बहुत मिली सेकेंड्स का फर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर बाकी की चीजें नहीं ऐड की है ना, सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड, तो लिटिल बिट चेंजेस देयर, ठीक है? ये 11 लिया, ये भी चेक करके देख सकते हैं। अगर इसको 12 लिया, 10 लिया, तो एक दिन पूरा पीछे जाता है। तो एक दिन के कितने मिली सेकेंड्स कम हो गए, वो इधर देख सकते हो, ओके? तो दिस वे दे हैव गिवन सम स्टैटिक, एंड इफ यू वांट टू डू डेट कंपैरिजन, दो डेट्स का कंपैरिजन करना है, डायरेक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, करेक्ट? तो if you have two dates, they say directly comparison operator on two date objects allowed. Okay, no need to convert them into timestamp and then compare that timestamps. कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग एंड सपोज हम देखते हैं ये दो डेट्स अपने पास है,
one is D3 and one is D4. Okay, or we'll take D2 and D4. D2 less than D4. It will come true only because D4 ये अभी का डेट है. D4 वो मार्च 1970 का था ना. Yes or no? मार्च नहीं. It has come as May, I guess. May 24 something. Okay, save नहीं किया. See, is it giving true? Obviously true ही रहेगा because D2 is the older date. D2 ये बहुत 1970 का है. And D3 लिया ना मैंने. D4 लिया. तो D4 is 2026 का डेट है. तो obviously true आएगा ही. ठीक है. तो you can do comparison. And you can do comparison on the timestamp basis also. ऐसा नहीं करना है. तो दोनों का टाइम निकाल के लाओ और फिर कंपेयर करो. Like this. D2 dot get time. Does get time return timestamp? Get time timestamp return करता है ना. Number of milliseconds. Getting कितने millisecond elapse हुए start of the calendar till that date. Getting so you can get that time and compare it with another. Like ये D1 है तो ये D2 का get time. ऐसे दोनों के टाइम स्टैम्प लाके भी कंपेयर कर सकते हो. गेटिंग इंटरनली यहां भी वही हो रहा है. यहां भी वो इंटरनली दोनों का टाइम स्टैम्प लाता रहेगा एंड फिर वो दो टाइम स्टैम्प्स कंपेयर होते हैं. सी, तो यू कैन गेट द टाइम स्टैम्प्स. अभी टाइम स्टैम्प लाया तो वो एक नंबर आएगा ना. टाइम स्टैम्प मीन्स इट्स अ नंबर representing how many milliseconds are elapsed from the start of the calendar. तो ये भी एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर्स अभी कंपेयर कर सकते हो. कह रहे. फिर अगर आपको दो डेट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, डायरेक्टली यू कैन सबट्रैक्ट. कह रहे. बट जब दो डेट्स सबट्रैक्ट करते हो तो वो आपको लाके देता है कितने मिली सेकेंड्स, हाउ मेनी मिली सेकेंड्स आर देयर इन दैट टू डेट्स. वो दो डेट के बीच में कितने मिली सेकेंड्स है वो लाके देगा. बट हमें डेज चाहिए तो वो जितना मिली सेकेंड है उसको डिवाइड करो. 1000 milliseconds में 1 second. 60 minutes. Yes or no? 60 seconds per minute, 60 minutes and 24 hours. Yes, एक दिन में कितने आवर्स है? 24 hours. पर आवर में कितने मिनट है? 60 मिनट. 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स है? 60 सेकेंड. और एक सेकेंड में कितनी मिली सेकेंड्स है? 1000 milliseconds. तो ये पूरा बन गया मिली सेकेंड. तो जितना मिली सेकेंड आया उसको डिवाइड किया इतने से तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाए. गेटिंग गाइस? तो ऐसे आप लोग नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हो. ओके, एग्जाम्पल क्या करते हैं हम, फिक्स अप एक डेट लेते हैं. D5, D5 नहीं, D6 इक्वल टू नाउ लेता हूं, मीनिंग करंट डेट एंड टाइम. एंड एक डेट हम लोग क्रिएट करता है जो वैल्यूज हम देंगे, दैट इज 2026 मंथ 7 है तो मैं 6 देता हूं. ठीक है. एंड 6 का 15 तारीख देता हूं. ओके. और फिर हम देखते हैं कि ये डेट और ये डेट के बीच में कितने डेज है. ओके. तो कंसोल डॉट लॉग एंड इफ आई डायरेक्टली राइट D7 D6 माइनस D7. क्यों? क्योंकि D6 लेटर डेट है, D7 पुराना डेट है. D7 पुराना डेट है और D6 अभी का डेट है. अभी अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, you will just get number of milliseconds between those two days. Two dates. ये डेट और ये डेट के बीच में कितने मिली सेकेंड्स है. तो हमें डेज चाहिए. तो फिर मैंने क्या कहा, यूज द कैलकुलेशन, डिवाइड इट विथ एक 24 दिन, 24 घंटे एक दिन में होता है. कितने मिनट्स है? 24
घंटे एक दिन में। कितने मिनट्स है? 60 मिनट। हर मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने मिली सेकंड? 1000 मिली सेकंड। तो ये भी तो मिली सेकंड ही आया है ना। ये मिली सेकंड को इतने मिली सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज। देखो 27 डेज वो बता रहा है। गेट इट? चेक करो 27 ही रहेंगे क्योंकि ये 15 दिन। कितवा मंथ है? सेवेंथ मंथ, जुलाई। तो जुलाई के 15 और अभी के 11। यस नो गाइस? ये जुलाई में 31 था ना शायद। तो वो 16 डेज और ये 11 दिन। तो 16 and 11 is 27 only, approximate. Yes or no, guys? Do you agree? This you can pass to math dot floor या seal. हायर साइड राउंड करना है या प्रीवियस साइड? तो फ्लोर दिया तो वो प्रीवियस इसको राउंड कर देगा। राउंड मीन्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है? सी। एंड 27 ही है गाइस। चेक भी करो ना, ये मैंने 15 ऑफ जुलाई दिया। तो उधर से 16 डेज आएंगे क्योंकि जुलाई में 31 होता है, आई एम श्योर। ठीक है? एंड राइट, जुलाई एंड अगस्त ऐसे दो कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें 31 डेज होता है। राइट और नो? फिर सितंबर में नहीं है, फिर अक्टूबर में होता है एंड फिर दिसंबर में होता है। ठीक है? तो वो 16 डेज और अभी के 11 डेज। अभी 11 डेज हुआ है ना ये मंथ के। तो वो 27 डेज ही बनते हैं। राइट? तो आई होप यू गॉट इट। तो दिस वाज समथिंग अबाउट डेट। ठीक है? Then in the next session, we will be seeing कैसे बनाना है। ठीक है? उसमें जेसन कंसेप्ट, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पढ़ना है कि कैसे की वैल्यू फॉर्म में यू कैन क्रिएट योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? एंड बाद में टेम्पलेट बेस्ड ऑब्जेक्ट्स भी है जो जावा का स्टाइल है, क्लास बनाने का एंड फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स। वो स्टाइल भी प्रोवाइडेड है। करेक्ट? एंड प्रोटोटाइप बेस्ड जो पुराना स्टाइल था। तो बोथ वे वी विल बी लर्निंग। ठीक है?